हाय एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा एंड आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बिगनर फ्रेंडली एवरीडे काइंड ऑफ मेकअप लुक यूजिंग ओनली 3 products which you can achieve very quickly, maybe within 2 to 5 minutes. And this makeup look you can do it on a regular basis when you're going to office, college, or even for a shopping and outing. It is perfect for a day outing as well. और ये प्रोडक्ट मैंने जो भी यूज़ करे हैं वो आई गेस सबके पास अवेलेबल होंगे बिकॉज इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी बजट फ्रेंडली एज वेल. सो इफ़ यू वांट टू नो मोर सो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग. ऑल राइट, सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मॉइस्चराइज़र लिया है. इट इज़ लैक्टोकैलामाइन जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र बिकॉज मेरी स्किन ना थोड़ी ऑयली एंड कॉम्बिनेशन काइंड ऑफ है, सो आई प्रेफर जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र. एंड इसको अच्छे से जनरस अमाउंट में लेके अपने पूरे चेहरे पे अप्लाई करना है. मसाज वेल एंड ऑलवेज टैप, डू नॉट फॉरगेट योर नेक एंड rub it properly so that you get a very nice luminous kind of base. Okay, and if you prep your skin nicely it will help you for a hydration level for the entire day. And always dry your moisturizer well before applying another thing. सो यहाँ पे मैंने एक सनस्क्रीन लिया है. ये मैंने डॉट एंड की का सनस्क्रीन लिया है. आप कोई भी ले सकते हैं एज इट इज़ एवरी डे. सो आई फील अप्लाइंग सनस्क्रीन इज़ अ गुड थिंग बिफोर हेडिंग आउट. So take a amount whatever is suitable for your skin type and skin tone, and then apply it thoroughly on your neck, face, and massage well. And you can see my skin looking better than before. आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे कंसीलर लिया है. ये मैंने मेबेलिन का कंसीलर लिया है और मैंने अपने चेहरे पे कोई फाउंडेशन या कुछ भी हैवी नहीं लगाना चाह रही थी. सो मैंने यहाँ पे कंसीलर लिया है और मैंने अपने फेस पे अच्छे से जो इम्पॉर्टेंट डार्क एरियाज़ रहते हैं लाइक अंडर आइज, फोरहेड, नोज़, ब्रिज ऑफ द नोज स्पेसिफिकली, एंड चिन एंड अपर लिप, लिटिल बिट ऑफ टी जोन you have to apply, and you have to spread it outwards so that your face doesn't look cakey and heavy. और अच्छे से इसको स्प्रेड कर लीजिए. अपने आईलिड्स को भी प्रेप कर लीजिए कंसीलर से. और जस्ट वट एवर इज़ लेफ्ट ऑन योर हैंड यू कैन यूज़ इट ऑन योर नेक. डू नॉट टेक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बिकॉज इट्स नॉट नीडेड. अब मैंने यहाँ पे, मुझे लग रहा था मेरे फेस पे समवेयर आई हैव डार्क स्पॉट्स, राइट. सो मैंने उसी जगह पे छोटे छोटे डॉट्स लेके वो लगा लिए हैं और उसी को मैं टैबिंग मोशन में अच्छे से टैप करके पूरे फेस पे स्प्रेड करूँगी. एंड फोरहेड पे भी यू कैन सी, राइट, आई हैव फ्यू डार्क स्पॉट्स, सो आई एम ट्राइंग टू हाइड दैट. उसके बाद मैंने उसको अच्छे से स्प्रेड कर लिया है. जस्ट यूज़ योर फिंगर फॉर ऑल द थिंग्स बिकॉज इट इज़ बिगनर फ्रेंडली एंड बजट फ्रेंडली. सो आई एम नॉट यूजिंग एनी tools like brushes, beauty blender, or anything, and I have done it. So next I have taken this Maybelline lip and cheek mousse kind of lipstick. It's very nice. I have taken a very tiny amount and I'm spreading it well on my lips. I'm not applying it fully because it is very pigmented, and you can use it same thing on your cheeks and your eyelids. So I have taken a few dots on my cheeks and I have applied it on my cheeks. You can see, right, I'm blending it well so that it gives me a very fresh look, right. And the whatever is left on my fingers I have used it on my nose as well because this look I personally like when your nose and cheeks are flushing. It gives very nice effect. And whatever is left on your finger, and you can take little bit more and apply it on your eyelid. Next I'm taking Lakme Insta eyeliner. You can, I think this eyeliner is like, I believe everyone owns it once in their life because it's budget friendly and the application is also very nice. So I have done a very thin eyeliner because it's everyday makeup, so I don't want to give heavy look of eyes. So I've done a very thinnest eyeliner what I can make. And you can take your time while doing it. I like eyeliner, so I have done it little quick, but you can take your time and make a perfect liner. Then what I have done, I have opened my hairs. I have opened my hairs and this is my final look, guys. You can see I have taken few photos so that you can understand how it is looking. It is very good for every day and it is very beginner friendly and very minimal products we have used, right. So it's very nice for your day outing, and thank you for watching my video. Thanks everyone, bye bye.